Fourth, and the most important, growth-oriented definition by Professor Samuelson. Professor Samuelson. Color changes to yellow. Chal. According to Professor Samuelson, economics is the study of how man and society choose. वहां पे क्या था? How a man chooses. इसने कहा कि नहीं, society as a whole भी और individual level पे भी. How a man and society choose with or without the use of money to employ scarce productive resources which could have alternative uses to produce various commodities over time and distribute them for consumption now and in the future among various people and groups of society. तो प्रोफेसर सैमुअलसन ने क्या किया? उन्होंने एडम स्मिथ की भी डेफिनेशन से पॉइंट्स लिए, उन्होंने अल्फ्रेड मार्शल के डेफिनेशन, वेलफेयर डेफिनेशन से भी पॉइंट्स लिए, उन्होंने स्कैरसिटी डेफिनेशन बाय रॉबिन्स उनके भी पॉइंट्स लिए, सारे पॉइंट्स कवर कर लिए तो हो गई मोस्ट सुटेबल. ठीक है कि नहीं? सारे पॉइंट्स कवर हुए ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन में. तो जो लास्ट में पेपर देता है वो ए का भी देखता है, बी का भी देखता है, सी का भी देखता है, फिर डिसाइड करता है कि मैं क्या लिखूं. तो मोस्टली उसको सबसे ज्यादा नंबर मिलते हैं. तो यही हुआ, सारे पॉइंट्स कवर हुए. मैन, सोसाइटी, इनकम, वेल्थ. पॉइंट वही हो रहा है, हाउ टू यूज द लिमिटेड रिसोर्सेज व्हिच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस. But you have to learn the entire definition. So we will read the definition again. Professor Samuelson, economics is the study of how man and society choose with or without the use of money, because it is not necessary that the decisions have to always be with respect to money. Time का money से कोई लेना देना है? No, but you have to make a choice with or without money to employ the scarce productive resources which could have alternative uses to produce various commodities over time and distribute. तो उन्होंने प्रोडक्शन भी लिया, डिस्ट्रीब्यूशन का फेज भी आ जाएगा. हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom to produce. For whom to produce was the problem of distribution of income. तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात हो रही है कि जो प्रोडक्शन हो गई अब उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है among the various resources, among the various people, distribute them for consumption now and in the future among the various people and groups of society. Samuelson's definition tells us that economics is a social science and it is mainly concerned with the way how society employs its limited resources for alternative uses. So it is a modified version of the scarcity definition. Professor Paul Samuelson won a Nobel Prize in economics in 1970. Professor Samuelson has done more than any other contemporary economist to raise the level of scientific analysis in the economic theory. Samuelson is often called the father of modern economics and considered by many to be the foremost academic economist of the 20th century. तो ये 1950-2009 हमारे प्रोफेसर एडम स्मिथ born 1723, तो 200 साल, ऑलमोस्ट 200 साल पहले, तो वो थे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. ये है फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स. तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स में तो वो थे ही नहीं, तो वो तो 1723 के, 18th सेंचुरी के, ये 20th सेंचुरी के. क्लियर? तो ऐसे याद रहेगा थोड़ा बहुत, मतलब आपको यू हैव टू फाइंड वेज कि अच्छा कंफ्यूज ना. अभी तो सुना है तो सब कुछ याद रहता है, एक हफ्ते बाद कौन स्मिथ, कौन मार्शल, कौन अल्फ्रेड और कौन सैमुएल्सन, सब मिक्स हो जाएगा. तो कैसे, मतलब फिर वो धीरे धीरे आपको पॉइंटर, अच्छा एडम स्मिथ 1723 18th सेंचुरी, सैमुएल्सन मॉडर्न 20th सेंचुरी, ठीक है ना. तो ऐसे फिर रिलेट कर सकते हैं, अच्छा वो होंगे ओरिजिनल फादर, ये हो गए फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स.
यू हैव टू फाइंड वेज। तो उससे क्या हुआ कि फिर कभी गलती नहीं होती, फिर भूलते नहीं है, कभी मिक्सअप भी हो जाए ना, रुको, सोचो, आंसर अपने आप निकल आएगा। Samuelson's definition is considered to be the most appropriate, क्योंकि सारे पॉइंट तो कवर कर लिए, most appropriate and satisfactory. It not only includes all the issues which were highlighted in earlier definitions, but also takes up the issue of economic growth and social welfare. क्या सारे पॉइंट्स कवर करे प्रोफेसर सैमुअल्सन ने. Father of modern economics, also got a Nobel Prize for his contribution to economics. So what conclusion can we draw by reading all the definitions? We can conclude with the following definition of economics, which is mainly used by many of the economists. So kisko mila prize? Professor Samuelson. Economics is the study of how people and society choose to employ scarce resources that could have alternative uses in order to produce various commodities that satisfy their wants and to distribute them for consumption among various persons and groups in society. क्या है? सैमुअल्सन की डेफिनेशन से ही ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन का ही वर्जन है. तो 4 डेफिनेशंस, मोस्ट यूज्ड, मोस्ट कॉमनली यूज्ड, ग्रोथ डेफिनेशन बाय प्रोफेसर सैमुअल्सन. पहले आप इतना रीड करेंगे, फिर हम इसके आगे करेंगे. चैप्टर 1 आज हम खत्म करेंगे, बट पहले रीड करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे.